Professor Dr. Istarul Haq to kindly come on the stage. Secretary, Pakistan Society of Gastroenterology, Dr. Om Prakash, to kindly assume the seat. At the same time, we are honored that we have got with us dignitaries, Professor Mahmood Ayaz, Director General, National Residency Program, CPSP, Professor Amir Zaman, Director General, DME Program, CPSP, Professor Abrar Ashraf, Professor General Mazhar, Professor General Suhail, Professor General Wasim, and Professor Asghar Bhatt Sahab. And I extend a warm welcome to all of you. To begin with the proceedings of today's inaugural session, I would request all the participants and our dignitaries to kindly stand, raise from their seats for the national anthem. Now, President, Pakistan Society of Gastroenterology, Professor Dr. Gyasu Nabi Tayyab, will give an overview of this summit and the presidential address. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Professor Shumail. It is my humble privilege to welcome you all on the 39th Annual Congress of Pakistan Society of Gastroenterology and GI Endoscopy. You all know that this journey began in 1983 when, in a small room in Mayo Hospital, Pakistan Society of Gastroenterology was started by seniors Professor Situl Hussain Saab, Professor Nusratullah Chaudhary, Professor Khwaja Sadiq Hassan, and others from Sindh and KPK. So ever since that time, there's been a long journey, and slowly and gradually there's been a development in the field of gastroenterology, a field which was not recognized initially, but with the heavy burden of GI diseases and liver disorders in the community, we all understand that GI and liver disorders, they need a special attention and need a dedicated facility as well as faculty. In that regard, the mission of Pakistan Society of Gastroenterology and GI Endoscopy is to teach, train, and do the research on important topics of GI and liver disorders. And this year, on the 39th year, we have been able to focus on the teaching and training on the endoscopy side, develop a research forum, let the researchers present their researches on video platform, as well as they are going to present early in the main sessions. And then to impart knowledge, we have gathered faculty from across the world. The faculty has come from United States, from Canada, from UK, from UAE, from a brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, from Thailand, and from Hong Kong. It is a world-renowned faculty,
And in the past 2 days, that we spent, they showed the skills in the 2 days endoscopy course where we were able to do quite a few novel procedures. For the first time in the history of Pakistan, we did endoscopic gastropexy, PPG measurement, and similarly so many other procedures which were not done in the past. I'm extremely thankful to one of my friends, Parit, from Thailand, who mentored us on the third space endoscopy 3 years back, just before COVID. And with his brilliant skills, he showed Z poem, D poem, and then G poem and Re poem as well. Just today, early in the morning, we got the results showing the brilliant work that he showed. Alhamdulillah, the 54 cases we were done in 2 days endoscopy workshop, they're all fine and they're doing perfectly well, and most of them have been discharged. My special thanks to Asian Endoscopic Ultrasound Group and his representative Anthony Teo is here, who is a world-renowned figure in the endohepatology and endoscopic management of pancreatic complications, and similarly so many other procedures. He is author of so many research articles and author of so many books as well. Similarly, for the first time, American College of Gastroenterology has sponsored 2 representatives, Dr. Khalid Sa, who has been our regular mentor in endoscopic ultrasound, and then they have sponsored the other members of American College of Gastroenterology as well to come to Pakistan and present their work. Governor Oklahoma and the ex-governor Asma Shaukat and Aslan Kalu and Dr. Sifa here in the hall for the meeting. My special thanks to Dr. Abdurrahman Al-Fada, who has come from Saudi Arabia, an excellent person, very accomplished person in EST, endoscopic ultrasound, ERCP, and he displayed his skills. And if I start taking the names of people who have come from the brotherly countries, it's going to be an endless discussion, and it's going to consume lots of time, but my thanks to all of them. Then the participants have come from across the country and from neighboring country, Afghanistan. My special thanks to all the delegates, and the total number of registrants have been more than 2,000, and that includes the nurses, that includes the technicians, that includes the doctors, that includes the PG students as well. People have come with their families, and they'll be enjoying the hospitality of Lahore, they'll be visiting the cultural heritage of Lahore, and I'm really thankful to all those delegates who have come with the families to enjoy social side of the city as well. 127 research papers have been accepted in the conference. Majority of them put on the display in the electronic platform, but few will be presented in the old form as well. And 3 researchers have been given the award. 35 pharmaceuticals have participated, and out of those 35 pharmaceuticals, Getz Pharmaceutical, Rossens Pharmaceuticals, Shazo, Scottman, Wilson, and Martin Doe have been our main sponsor. I understand that in these economic difficult circumstances, where there has been political instability and there's been budget constraints as well, generating funds by us and generating funds by the pharmaceutical as well to sponsor these academic activities is a marathon task. I'm really thankful to all the financial sponsors for giving us the support, giving us the honor, and giving us the confidence that they always had in us, and we were able to generate this academic activity. I'm sure they will be pleased with the investment, and I hope that in future as well they'll continue to sponsor Pakistan Society of Gastroenterology for these academic activities. In the past couple of years, we have been able to launch PSG app, which is available on the iOS as well as on Android telephones. It's a continuous source of education and material. All the academic activities that we do, they will be available, and they're available on the PSG app. PSG website was not very active in the past,
but thanks to Professor Shamail and Professor Isra and the rest of the team, now the PSG website is fully functional. All the relevant details about the society, all the relevant activities of the Pakistan Society of Gastroenterology, membership form, their rules and regulations, bylaws, and regional meetings are available on the Pakistan Society of Gastroenterology. So anybody can go onto the site, can view the lectures which were done in the past. The long series of 44 webinars that we did during the COVID, they're all available in addition to so many other educational activities which are there on that. Live streaming was available for this conference. It's available for those of us who could not come to Lahore. So I'm sure they'll be able to watch these events without any hindrance. PSG Journal has been an issue. It is my humble request and appeal to all the PSG members to regularly contribute to the PSG Journal so that we may be able to bring it to the international standards. It should be we want it to be a peer-reviewed journal. We want it to be one of the best journals in the world. And the research published in Pakistan Society of Gastroenterology should be acknowledged and read across the globe. In this main conference, we have addressed the endoscopy, and since morning there have been various topics for endoscopy, and the world-class faculty has been addressing those issues. Tuberculosis is a very, very important issue in our country, although it's not a very huge problem in the rest of the world, but definitely in subcontinent, in our part of the world, tuberculosis remains an issue, and that's the reason that we had put that an ongoing saga on tuberculosis should be discussed amongst our colleagues, amongst the members of the Pakistan Society of Gastroenterology. We need to devise a strategy to deal with it in a better way. Then functional disorders, a poorly understood entity, by and large ignored entity, and still there's plenty of room for the improvement in the management of neurogastromotility disorders. And there's going to be a dedicated session on that, and the world-class faculty is going to be here. And one of our sons of Pakistan who works in UK, he is here along with Anton and local faculty who are going to deliberate on the neurogastromotility side. Luminal disorders like celiac disease, IBD, again, the number of cases that we know, they're just the tip of the iceberg. There are many more cases in the community who are suffering from luminal disorders as compared to what we know. And we need to work better, we need to sensitize our community, we need to diagnose them in a better way, and we need to treat them more emphatically and more empathetically. And again, we have a huge focus on the management of IBD and metabolic disorders like these. Hepatology, we have a huge problem. One of those countries in the world where hepatitis C is still increasing. Although we are trying to eliminate hepatitis C in our community for the past 7 years, a huge effort has been made to eliminate hepatitis C, but still the challenge remains there because there's so many people in the community who don't know about this status, and we have failed to eliminate all those factors which make the people suffer from hepatitis C. Those who knew that they are suffering from the virus infection, they got themselves treated, but still the unknown, they present to us at a stage when they already have cirrhosis of liver, and in order to prevent them, we need a mammoth task. We need to have a huge effort so that all those who are there in the community, we need to identify them, treat them appropriately, so that we may be able to treat hepatitis C and eliminate hepatitis C from our society. But then NASH, NAFLD, other metabolic disorders of liver disease, and the consequences of chronic liver disorder, irrespective of whether it's hepatitis B or C or NASH, meaning by cirrhosis of liver and its complications, they need to be managed, and for that we have a dedicated session. Our backbone remains the family system, and in the coming days, we have a dedicated session with family physicians, and we're going to interact them one-on-one, talk to them, understand their issues, make them understand our sensitivities, and I'm sure by the end of the conference, the society will be winner, the family physicians will be winner, we'll be winner. We'll
our focus is to try to eliminate the diseases which can be eliminated, try to control those diseases which can be controlled, try to improve the quality of life of the people, try to improve the quantity of the life of the people, and at the same time try to improve the teaching and training of all the students, all the PGs, all the young fellows, so that today who are at the learning stage, tomorrow they should be at a stage where they may be able to impart a better training to their younger fellows, to their young police, and to the students. With these words, I thank my team, Professor Isra Sahab in particular, who worked tirelessly, along with Professor Aqib Dilshad, Dr. Gyasul Hassan, Dr. Shafqat Rasool, Dr. Sidra, Dr. Fawwa, and all the rest of the team. I understand that it's difficult for me to name each and every one of them because there are at least 60, 65 of them who have been working day and night to make this conference happen and happen in a smooth way. Today in the hall we have so many dignitaries, and in particularly I'm thankful to Professor Shoaib Shafi, who has been my senior colleague in King Edward Medical College. And then we have been interacting in the gastroenterology fund on so many times. But as on today, he is here in the chair of President Pakistan Society of President College of Physician Surgeons, and he happens to be a gastroenterologist as well. He understands the sensitivities of the discipline. He understands the importance of this discipline, and I'm sure in his address he's going to talk a lot about the teaching and training in gastroenterology. You all know that College of Physician Surgeons is about teaching and training of the young students, young fellows. They want to promote education, they want to promote training, and they want to see doctors as better future specialists so that masses, awam may benefit from the better trained doctors. And along with Professor Shoaib Shafi, I'm thankful to my class fellow, my friend, Professor Khalid Masood Gondar, who is Senior Vice President of College of Physician Surgeons, Dr. Abrar Ashraf, Mahmood Ayaz, Amir Zaman, and so many other colleagues, including Professor Tayyib, who shares my name, and we have been exchanging our patients. Gynae patients have been coming to know for the treatment, thinking that I'm a gynecologist, and my patients have been going to him thinking that Professor Tayyib is a gastroenterologist, but we have been exchanging our patients. And all others who have come along with Professor Shoaib Shafi, thank you very much for honoring us. Thank you very much for coming on this occasion. God bless you all. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much, Professor Gyas. You have always set high standards. You have always made us proud, and you will continue to be a source of inspiration for generations to come. A brief report by the General Secretary, Pakistan Society of Gastroenterology, Dr. Om Prakash. Yes. Thank you. So it's an honor for me to present the Pakistan Society of Gastroenterology as a General Secretary. Thank you, Dr. Ghayas, who has made my life easier. Almost he has given the complete report of the PSG. So anyway, as Dr. Ghayas mentioned in his opening remarks, that PSG is almost now 39-year-old. It began in a very small room, and it has now mushroomed to the largest society of the Pakistan. And it has played significant role in the recognition of the GI gastroenterology in Pakistan, considering the hepatitis and GI problems. So having said that, as an executive committee member and society secretary, we took this post about 2 years back when in a challenging time, you know, that it was just the middle of the COVID, and we started that, and so we faced a lot of challenges. To begin with, our executive committee had the first biggest challenge of the Pakistan Society Gastroenterology bank accounts, which were seized because of the new government rules and regulations, and we have no funds to, you know, just one account was working, the sin chapter, rest of the accounts were seized. How can we make these things operational? So luckily, with the effort of all the executive members and the other resourceful persons who helped us in making
these accounts active. Now these accounts are active, number one. The other issues that we were facing was the website. So in these last 2 years, we have been able to initiate the website, which is now active, as Dr. Rayas has already alluded about that this is now active. All the contents is available to view. You can go back and review those things. Third was the issue of the academic activities during the COVID time. So of course that challenge has given us the opportunity of creating the new ways of embarking on the communicate the teaching, so that we did all those activities as we used to do. Like every chapter, we have got 4 chapters, the Sindh, Punjab, Balochistan and KPK. Every chapter has done 8 to 10 activities per year, like all the World Digestive Days, World Hepatitis Days, all different days which are globally recognized and announced. So that we have been doing. All the chapters are doing very great work in that sense, and our society is supporting all those activities like public awareness sessions and everything. And the other was the member enhancement. So we have been able to increase the numbers. In the last 2 years, approximately 60 to 70 new members have been inducted. And now our strength of our society is approximately 560 plus members. And these are the full-time members who are supporting our societies. So with this, I think I'm finishing and handing over to Sir. Thank you, Dr. Om Prakash. We feel proud that we have got a person with us who has worked hard whole of his life to improve the image of Pakistan and to improve the image of our degree by maintaining high standards in CPSP and in medical education. We are further proud that he is a gastroenterologist as well. I would request Professor Dr. Muhammad Shoaib Shafi to kindly come on the stage and kindly give a brief presentation of the work which is being done in the field of gastroenterology at CPSP. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Before I start my very brief talk, I would just like to thank Professor Gastroenterology that when I cleared my FCPS exam and I left East Medical Ward, he joined the same unit as registrar, I think in 88. PSG was formed when I was doing a house job in 1983, and it was formed in a small room, East Medical Unit of my hospital. And Professor Khwaya Sadiq was, I think, he was the first president, and with his team was Professor Siftul Hussain and Professor Nusratullah Chaudhry. So although I had a lot of interest in hematology, and as a house physician and as PGT I used to do bone marrow examination, but somehow Khwaya Sadiq Sahab, Nusratullah Chaudhry Sahab and Siftul Hussain Sahab, and one of my teachers sitting here, Professor Mueed, I used to call him Boss Mueed, because when I became registrar, he was a senior registrar. And due to their charisma, I was attracted towards gastroenterology more than any other subject in medicine. So I'm grateful to Boss Mueed, and he has been our instrumental in teaching us the basic skills of endoscopy. So the journey of Gastroenterology Society started from 1983, then it progressed, and in 1993, first faculty of gastroenterology was formed, and with Professor Anwar Khan was the dean of the faculty. Professor Wasim Jafri was there, and Professor Siftul Hussain was there, and I was also one of the members of the faculty of first gastroenterology meeting which was held in Karachi, CPSP. And then the journey to start the fellowship of gastroenterology started. And I think the first fellow of gastroenterology was passed in 1999, if I'm not wrong. One of my class fellows, Arshad Kamal Bhatt, joined this program in Sheikh Zayed Hospital under Professor Anwar Khan, and he was the first one to clear this exam in gastroenterology.
I think then General Farooq was after that. So I was posted in Rawalpindi. I tried to join this program in Sheikh Zayed Hospital because there was no place in Rawalpindi that was acceptable. But due to my own family circumstances and the service problems, I could not leave Rawalpindi for 3 years. So I could not do this training, or I could not clear FCPS gastroenterology. So this is a fact. Just going back to the College of Physician Surgeon roles, we should all pray for the soul of General Wajid Barki. He was the instrumental man who, with his vision, he persuaded the government at that time to launch to the establishment of CPSP in 1962 by an ordinance of the government. And 50 leading specialists of that time from both East and West Pakistan, they had started this journey of forming the CPSP. This is a just council which tenure is going to end on 18th of March this year. I won't go into detail of the statistics because I've been asked by one of my senior colleagues not to go into detail of the figures, but this is just to give the importance that currently we have got about 34,000 fellows, 12,000 almost members, and total specialists of 45,000. We are imparting fellowship examination in 81 disciplines and 22 in MCPS. This is the statistical strength of the hospital wise. In Pakistan there are 308 hospitals and in 5,370 supervisors, and we have got 34,000 to 327 trainees. Now I'll just go into the detail of the gastroenterology facts and figures in Pakistan. In Pakistan there are 49 hospitals which have got accredited gastroenterology units recognized by the college. There are total 88 supervisors, and if you see the percentage, 94.32% are male supervisors and only 5% are female supervisors among the 88 supervisors. And the trainees, there are 337 registered trainees and 65% are male, and almost 66% are male and 34% are female trainees. So hopefully after 2 to 3 years, the supervisor ratio which is so mismatched between the male and female gender, I think that will improve and we'll have more female trainers also. But to date there are almost negligible or nothing. I've given the figures of Punjab because I'm standing in Lahore. There are 27 hospitals in Punjab, including the federal hospitals also, that is PIMS and Shifa also. And 39 supervisors and total 145 trainees. Now you can see the total population of Pakistan or total population of Punjab, which is more than 11 crore. And we have got only 145 trainees. So after 2 to 3 years, if they also clear the exams, total fellows in Pakistan is 530. And they are not only in Pakistan, they are the total figure which we have. Maybe in the 530 figure, 30, 40 or maybe 100 may be working in Saudi Arabia or somewhere else. So this is just a graph that tells us that only 6% are female supervisors and 34% female trainees. This notification came in 2020 and I had to face a lot of criticism and applause both when this notification came, because I was at that time also a counselor and vice president at that time. But before this notification came, which notified that from induction, July 2020 induction, and registered in 2022 after 2 years of IM medicine, FCPS will be of second fellowship. It won't be first. Although there was a lot of criticism, but there was a lot of appreciation also. Actually, the College of Physician Surgeon had asked all these supervisors, which the number you have seen there, 88, and majority of them had suggested that it should become a second fellowship. Then we had also asked the faculty also,
So faculty had unanimously suggested that they should become a second fellowship. Then it was notified, and from January this last year, 2022, it has been implemented. The last selection was done in January, and in July, now all the induction is of the as a second FCPS. There's a lot of criticism, lot of talks, but that was all experience-based talk. If you talk of evidence-based, in January 2020, when we were allowing the IMM candidates to enter the program, 7 were fresh registered and 66 were re-registration. And in July 2022, when the College of Physicians and Surgeons have now started inducting only the second FCPS, there will be 11 fresh registration and 43 re-registration. So if you compare difference between 66 and 43, this is almost 20 candidates. They were less entered into this scheme because now this has become a lengthy process. This is the most lengthiest training any other, comparing with any other specialty. So this is 4 plus 3, 7 years, 1 year after FCPS medicine to get through, and 1 year after FCPS. So it is almost now 9 years training. So it's a long process. Now there is a lot of demand. In the next slide I will tell you that whether further any FCPS training should be started or not. This is the names of the faculty, and I am really grateful to all these eminent gastroenterologists, starting from General Farooq Saeed, Professor Rasanavi Tayyib, Arif Amir Nawaz, Ali Akbar Siddiq, Ijaz Muhammad Khan, Khalid Hamid, Professor Sharbat Khan, and Professor Zagham Abbas. They are the currently members and the secretary and the deans of this faculty, which has worked really day in and day out in last 2 to 3 years in reorganizing the examination setup of our college. They were the faculty, with the help of other supervisors, they reorganized the talks. Talks were introduced, and evaluation of the candidates is being done, I think, in much better way. So hats off to Professor Rasanavi Tayyib. Under his leadership, we have been able to do a lot of work, and he is one of the deans who really works in this specialty. Because I won't comment about the other faculties, but in the coming slide you will see that how he has performed. This is the statistical strength of hepatopancreatobiliary and liver transplant surgery. Because we have got members in PSG also, surgeons, they are also members. In the past, various surgeons have been, the president also elected of the PSG also. So, as a practicing gastroenterologist, I had this always in mind that this liver transplant surgery and hepatopancreatobiliary surgery should be started as a second specialty after general surgery. So this was notified in the last year, and from July 2022, 7 hospitals have been accredited, and there are 10 supervisors, 22 trainees, they have been registered. So 6 months have passed and 2.5 years are left. So from 2.5 years from today, hopefully in this country we'll be having trained hepatopancreatobiliary surgeons and liver transplant surgeons as well. So the trainees, the supervisors, they are all males, and trainees, they are again 95% males and 4.5% are female in this training program of hepatopancreatobiliary surgery. This is again now the future vision of the CPSP. We are going to start robotic surgery fellowship program, and I think the pioneer among the surgeons is Professor Mahmood Ayaz and Professor Abrar sitting here. They will be taking a lead, and they have started this program already in King Edward Medical University. This hepatopancreatobiliary surgery and liver transplant surgery, this program, as I mentioned last slide, that have been started, trainees are inducted, and inshallah within the next 2.5 years we'll be having new fellows. Colorectal surgery has been announced, and from January this year, induction has been done. Different departments have been accredited, and inshallah this is going to take good take off. And with that, we have been
surgeon, they are requesting also for upper GI surgery also as a second specialty also. So by July, hopefully, we will be launching this upper GI surgery also fellowship. Now the question about fellowship after FCPS gastroenterology or fellowship in advanced hepatology. This I put in question mark. This I will like to have the input from right from our trainees, from our fellows in gastroenterology, from our supervisors, from our faculty, and obviously from our dean also. That should we start any fellowship program, because it is already a 9 years robust program. So can we afford to start a new program of fellowship in advanced hepatology, like in transplant physician concept, which I think there should be, or we should increase the area of in the curriculum about the liver transplant also. Already we have a substantial 6 months time duration for that. And if we cannot afford to start new fellowship program, we are also thinking and planning of certified program for advanced procedures. Like if we start a structured program for endoscopic ultrasound, advanced ERCPs or other advanced procedures, and that should be a structured program by the CPSP, also a registered program, and then after say 6 months or 1 year, we can have a Stokes type of exam, and then we can issue a certification to those successful candidates. That can be discussed, and we are already discussing it. And I would request Professor Riaz Nabi Tayyib to give this plan also within next 3 months, so that by July this year we may start this certified programs. Yes, about intervention radiology, we have already done all the homework for intervention radiology. The only thing lacking is the MCQs. We have done with the curriculum, we have done with the resource places, and DMEs has done work, lot of work. Professor Amir Zaman is the Director General of Directorate of Medical Education in CPSP. He is a surgeon himself. So he has taken all these steps, but now we are waiting for 1000 MCQs questions. The time when we receive that, I hope that within 1 month that question work will be done. So we have notified that from July 2023 we are going to start induction of intervention radiology as a second specialty after radiology. Now there is a lot of hue and cry, lot of criticism, lot of talk that there is no standardization of the training programs in the CPSP. Last year, in the previous government, there was a health task force formed by the Prime Minister, and they called us and they discussed with us about the issues and problem of training. And the chairman of that PM task force said, Dr. Shoaib, you know, I said, sir, what? He said that there's a boy who has done FCPS in pulmonology and he doesn't know how to hold the bronchoscope. So I asked him, sir, 2.5 kilometers from your office in the federal capital, there's a hospital known as PIMS, and I know the state of affairs of the gastroenterology and the pulmonology and the dermatology and the oncology and the surgery and urology and cardiac surgery and cardiology department of PIMS. So I told all these departments what were the deficiencies in those departments. I said, sir, in 2.5 years, your government has not been able to make one hospital an exemplary hospital in the public sector, because you have all the powers, financial and administrative powers. CPSP does not have a financial or administrative power. We are just a training body. We give the curriculum, and it is our duty to see that that curriculum is implemented in letter and spirit. I said, we have some flaws. You are right, sir, about this pulmonology, but I ask you that there are a lot of problems in gastroenterology also. So from right that day after the meeting, General Mother sitting over here, he was sitting with me in that meeting, and he was pressing my hand and he was saying in his language, Shoaib sahab, hath hawla rakho.
government ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I will talk the government with same tone and confidence because I've been elected by 33,000 fellows of this country and I have the support of the 34,000 PGTs. I have got the support of all the faculties and do not take a single penny from any federal or provincial government or any institutes in running this college. Alhamdulillah, we are a self-sustained institution and we can always talk eye to eye with any government departments. So I told them that you as a government correct your own departments, the public hospitals. Now I think many of the private public hospitals, they are taking lead as far as the procedural in fellowship in which a lot of procedures they are involved. So this is a fact. So from that day, Dr. Mohammed Ayaz is sitting here and he is our Director of National Residency Program. He told me to work on this, then we discussed with our DME people. Professor Gondal has done Masters and PhD in medical education. So we thought this and within last 2 years we have developed this workplace-based assessment tools. And inshallah, it is my humble plan to make this WPBA different tools implemented from July 2023, inshallah. And we have developed 2 tools, mini-SEX and DOPS. But next target will be to introduce case-based discussion and OSATs, which will lead to identification of entrustable professional activities. And there will be numbers of these EPAs. OSAT's objective structured assessment of technical skills are one of the workplace-based assessment tools used in WPBA. So we have still not developed these OSATs. We are in the process of developing that. We have developed the mini-SEX and the DOPS. And when we'll start those 2 type of tools, by the year and a half, inshallah, we plan to start this OSATs also and this EPAs also. The entrustable professional activity is a key task of a discipline that is specialty or subspecialty that an individual can be trusted to perform in a given healthcare context once sufficient competence has been demonstrated. So we will be checking our trainees to secure the sufficient number of EPAs by the end of the training. So I hope from July 2023, if we start all these, so by 2025, when our fellows will be passing out, clearing this exam, the standard of training would have increased and I hope the pass percentage would have been increased. I am so sad when I see the results of all the specialty, but especially to talk of the gastroenterology. The results of the written theory are extremely disappointing, and however the results of the clinical exam, but when we have started these talks, they have relatively improved. Now coming to the WPBA status in different disciplines. These are the disciplines where these WPA have been finalized. In the second specialties, these are specialties where now these 2 tools have been synthesized and we are going to start. But my salute to Professor Gastroenterology, he was the first specialty gastroenterology, and with General Farooq and all the eminent gastroenterologists, they have now developed these tools, and both these tools, they are developed, and inshallah we will be starting. But I will be needing your help, the help of the supervisors. I am sorry to say, and let me tell you, the trainees, they are hungry, they want to learn, but some of the supervisors, they do not give us the feedback after 3 months. So I would just request, and from July, if I am still holding this rostrum, I intend to, I'm not warning you, but we intend to give a amber line, red line to the supervisors. If they do not cooperate in this training program, they may be suspended also. So I want that our supervisors should be more proactive in implementing those skills and checking those skills to the trainees and then reporting to us on 3 monthly basis. Then introduction of concept of self-study for accredited units.
daily whenever I move to any city, I get different reports कि सर आपके सेंटर में तो ये काम नहीं हो रहा, सर आपके फलाइन सेंटर में सर एंडोस्कोप ख़राब है, सर वहाँ तो 6 महीने से ERCPs नहीं हुई, सर ये प्रोसीजर नहीं हो रहा, सर ब्रोंकोस्कोप नहीं हो रही. उसके लिए we have developed self-study charts and we are going to send them. It has been approved by the council. We are going to send to all the training accredited units and we are going to get their remarks, feedback within 2 years after sending. And then we are going to now re-inspect the units on random basis, city-wise. So the units will be revisited without taking any single penny from the hospitals, and we will be checking that whether those procedures or procedure skills they are being actually carried out or not. We are also going to start certificates of good academic standing in order to encourage supervisors to contribute in academic activities and record their contribution. A comprehensive plan has been made, and this plan includes assigning scores to each activity and consider these scores for nominating for the faculty member, because you know the medicine, surgery, gynae, peds and ophthalmology faculties are elected as we the council are elected, but the faculty, the super specialty faculties, they are still nominated by the council and the president. So to identify among those 530 fellows of gastroenterology who will be in the faculty, we will be having this scoring for faculty member for being examiner, and we are now getting invitation from international places like Saudi Arabia, Nepal, Bangladesh, England and Ireland, and also Sudan, and now South Africa also, that we should send our gastroenterologist supervisors to be their examiners as well, and annual awards also. Now this is just end about the gastroenterology feedback or efforts which we are doing. Just briefly I will just show you the centers CPSP has developed from Karachi up to the Gilgit, and also few international centers like Kathmandu, Nepal, Riyadh, Saudi Arabia, Dublin, Ireland and Birmingham. This is a new center which has been built by CPSP, not by CPSP, it has been gifted to us by Pakistan Army. And as I said earlier also, that we do not get any funds or any amount from any governments or any organization. When the Chief of Army Staff visited us and he offered me some money for the CPSP, so I was strong enough and humble enough also to say that, sir, we do not take any cash. However, you can ask your FWO to construct building for us, because we had this land and I was finding difficult to organize and to supervise this construction in Gilgit. So within 2 days the order reached FWO. Within 2 days the money was transferred and they started on the 7th day. And within record time of 6 months you can see this building has come up. So it has got conference rooms, examination halls. या थोड़ी तालियां तो मार दें इस बात पे जरा प्लीज. आपका पैसा कोई खर्च नहीं हुआ और हमें पाकिस्तान आर्मी ने हमें ये तोहफा दे दिया. और उस इलाके में जहां सीमेंट और जो सरिया है ना वो पिंडी से जाया करता था, ब्लॉक्स भी यहाँ से जाते थे, ये सेंटर बन गया एंड इट हैज़ गॉट. अच्छा, अच्छी खबर आपके लिए ये है, नीचे तो वर्कशॉप्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल है, ऊपर के फ्लोर में मैंने 5 बेडरूम बना दिए हैं. ये आप तमाम फेलोज़ के लिए और आपके सुपरवाइजर्स के लिए हैं, एग्जामिनर्स के लिए हैं. वहाँ जाके आप ठहरें, इंजॉय करें नॉर्दर्न एरियाज़ की स्टे को. एक कुक भी रखती है और आपको स्टे और ब्रेकफास्ट मिलेगा वहाँ. ये मेरी तरफ से आपको दावत है. बेशक आप अभी चले जाएँ, प्लेस इज देयर. अच्छा, ये आप अंदर रूम देख लें. ये सारा जनाब इंटरवुड से मैंने फर्नीचर ख़रीदा है इस्लामाबाद से, कौंसिल ने अप्रूव किया और सारा फर्नीचर CPSP की कौंसिल की तरफ से तोहफा है. ये आप इसका क्वालिटी देख लें. और अच्छा जी, ये इस्लामाबाद का सेंटर जो है ना, वहाँ भी हमने परसों, ये आप देखें छत हो गई है और वी आर बिल्डिंग रूम्स इन दी इस्लामाबाद सेंटर फॉर एग्जामिनर्स, फॉर फेलोज़. बड़े फेलो आते हैं जी. अमेरिकन एम्बेसी में मैंने शुएब साहब, मैंने वो वीज़ा के लिए जाना है तो अपनी गाड़ी आप दे दें, आपकी गाड़ी अंदर चली जाती है. मैं कहा गाड़ी क्या, मेरा तो दिल भी फेलोज़ के लिए हाजिर है. अब मेरा कमरे भी हाजिर होंगे, जिसने भी इस्लामाबाद आना है वो यहाँ ठहर सकेगा. हम 9 to 10 रूम बना रहे हैं और इंशाल्लाह
मैंने ठेकेदार को एक बात कही है, मैंने कहा यार कि रमज़ान है, मुझे ये आप कंप्लीट करके दो। तो ठेकेदार ने मुझे कहा, परसों मिला था, ज़िया नाम है उसका, उसने कहा सर एक इदारा है जहाँ मुझे ना चेक निकलवाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। आप इस्लामाबाद बैठे होते हैं या आप लाहौर होते हैं, कराची का अमला भी मेरे से ताउन करा होता है, यकीन करने कहा सर एक इदारा है जहाँ हम बगैर रिश्वत दिए हुए हम जो है ना हमें चेक्स मिल जाते हैं। मैंने कहा यार क्वालिटी पे मैं नहीं करूँगा आपसे वो मानूंगा, लेकिन मैंने कहा क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, पैसे झट मिल रहे हैं, पब्लिक आ रही है। उस दिन मैं इतना खुश हुआ तो मुझे कहते सर आपको ये नाम दे दें, तो मैंने कहा यार बकरा मेरी तरफ से है। तो उन्होंने कहा जी खाना तो बन गया है। फिर मैंने मीठे चावल मंगवाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन 60 बंदों ने ये कंस्ट्रक्शन कार्य वो उसमें शामिल थे। तो मैं ये दिखावे के लिए नहीं कहा, वो अल्लाह की राह में छुपा के खर्च करना होता है, लेकिन कुरान में लिखा है दिखा के या जाहिर करके दोनों कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये एबटाबाद की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हुई है, वहाँ भी हॉल्स नए बन रहे हैं, रूम्स। एबटाबाद वाले हमसे भी आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि सर ये जगह ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा इस्लामाबाद भी खूबसूरत है। उन्होंने कहा यहाँ 12 कमरे बनवा दें, तो कौंसिल ने 12 कमरे अप्रूव कर लिए, तो वहाँ 12 रूम्स बन रहे हैं। क्योंकि वहाँ जब आप जाएंगे तो सैर करेंगे, तो आप इस्लामाबाद ठहरें, आप एबटाबाद ठहरें या गिलगित ठहरें, हर जगह आपके लिए माशाल्लाह रूम्स ही रूम्स हैं। ये लाहौर का सेंटर जो है ये अंडर गोंदल साहब ने इसकी रेनोवेशन स्टार्ट कर दी है। अब ये ऊपर गोंदल साहब नहीं बैठे हुए, एक मजदूर बैठे हुए, लेकिन गोंदल साहब भी इसी तरह मजदूर की तरह वहाँ काम करते हैं। ऊपर देखेंगे कोयटा के भी हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी, और कोयटा के भी ये 2 दिन पहले की तस्वीर है। गंबट का जी हमें वहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यूनिट भी रिकगनाइज हो गया, शायद लोग बैठे हों गंबट से। वहाँ हेपेटो पेनकेटो बिलियरी सर्जरी का यूनिट रिकगनाइज हो गया है, वहाँ ट्रेनीज रिकगनाइज हो गए हैं, वहाँ सुपरवाइजर्स बन गए हैं, और उन्होंने हमें ये तोहफा दे दिया बना हुआ। ठीक है जी, तो जिस तरह वो आर्मी ने हमें दिया तोहफा गिलगित में, ये घंबट में इन लोगों ने हमें, अब देखें, और साथ लॉन भी दे दिया उन्होंने। तो यहाँ इन्होंने हमें फर्नीचर भी साथ ही दे दिया, लैपटॉप मैंने भिजवा दिए वहाँ। ये हमारा सेंटर 14 अगस्त को पाकिस्तान का तराना था, हमने कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, और हमने जाके इसकी ओपनिंग सेरेमनी की। आप गोंदल साहब को, ऑस्कर बट साहब को देख सकते हैं, मजर इसाक साहब, मसरूर साहब खड़े हैं, और वहाँ के रीजनल डायरेक्टर हबीब साहब खड़े हैं, बाकी फेलोज़ खड़े हैं, और हमने यूके में बर्मिंघम में CPSP सेंटर बना दिया। अब आप हैरान हो रहे होंगे सारे कि ये जी पैसे भी, फीस भी नहीं बढ़ाई, और गवर्नमेंट से पैसे भी नहीं लेते, आर्मी तक को वापस दे देते हैं पैसे, नहीं तो लोग तो आर्मी से बड़ा शौकीनी से पैसे लेते हैं। तो ये किस तरह हो रहा है? और यकीन करेंगे 3 साल का हमने एडवांस भी जमा करा दिया है। वहाँ पूरे वो डॉक्यूमेंट लिखने पड़ते हैं, इंग्लैंड में कोई किराए पे बिल्डिंग लेनी हो, वो भी जमा करा दिए। तो अगले दिन 15 अगस्त को पार्ट 1 एग्ज़ाम हो रहा था, हमने कहा कि हम पार्ट 1 एग्ज़ाम शुरू करते हैं। तो गोंदल साहब ने और बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा जी हम टेस्ट के तौर पे देते हैं। मैंने कहा दे जी, सारे बैठ के देने के लिए। आपको सुन के खुशी होगी कि तमाम काउंसलर सारे फेल हो गए, सारे के सारे फेल हो गए, क्योंकि कट ऑफ लेवल जो था 75% था पार्ट 1 का, तो हमारे में से 70 से किसी के ज़्यादा नहीं आए। लेकिन गोंदल साहब के 70 आ गए थे, 69 में मदर साहब के आए, मेरे 67 आए थे, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं पास कर सका 75। लेकिन सिस्टम ठीक था हमारा, ठीक है जी। और 3 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आपने 3 की खातिर इतने खर्चे क्यों कर दिए? परसों मैं कराची बैठा था, चीफ कंट्रोलर ने बताया कि नाउ 43 स्टूडेंट दे अपीयर्ड एग्जाम डे बिफोर यस्टरडे। तो अब 3 से 43 हो गए हैं, 400 पाउंड हम उनकी फ़ीस ले रहे हैं, तो बरकत आ गई हमारे पास। तो इंशाल्लाह अब कराची यूके का सेंटर सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ भी आपके लिए 2 कमरे में वहाँ मज़ीद हायर करूँ, ताकि जब आप इंग्लैंड वगैरह जाएँ तो वहाँ भी सस्ते रेट्स पे आप वहाँ ठहर सकें इंशाल्लाह। तो वो सेंटर पूरा फर्निश्ड हो गया है, और उसमें हमारा पार्ट 1, इंटरमीडिएट मॉड्यूल, पार्ट 2 और स्पेशलिटी के पार्ट 2, ये तमाम एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। और अब जैसा बताया परसों 43 लोगों ने कहा। ये हमने नेपाल गए, नेपाल में जनाब हमने 66 लोगों को FCPS की डिग्रीज़ दी, और उनके हेल्थ मिनिस्ट्री बैठे हुए स्टेज पे, पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, हमारे मिलिट्री अटैची बैठे हुए थे, और हमारे सब लोगों को हमने वहाँ फेलोशिप दी, क्योंकि ताकि उनका ख़र्चा बच जाए पाकिस्तान आने का, और दे वर ऑल वेरी हैप्पी। ये हमारे नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान। ये फाटा हाउस में MOU साइन हो रहा है बिटवीन द CPSP एंड अफगान नेशनल्स
in front with the Ministry of Health, Federal Government, Ministry of Foreign Affairs, and with the Special Assistant to Prime Minister on at Afghan Affairs, Ambassador Sadiq बैठे हुए हैं, और साथ उनके हेल्थ मिनिस्टर कलंदर इबाद बैठे हुए हैं, और एक तरफ मैं नाचीज़ बंदा आपके साइड पे बैठा हुआ है, और ये डिस्कशन हो रही है. उसमें CPSP ने अफ़गानिस्तान को ऑफ़र दी कि हम आपके ट्रेनीज़ को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग हम अरेंज करके देंगे. फेडरल गवर्नमेंट ने 20 लोगों का वो कर दिया, उसके फंड्स मुहैया कर लिए. सो 28 स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए, तो कुछ को पंजाब गवर्नमेंट दे दिया. सो ऑल हैव बीन नाउ एडजस्टेड इन दिस. देन वी वेंट टू सऊदी अरेबिया, सऊदी कमीशन ऑफ हेल्थ स्पेशलिस्ट से हमारी मीटिंग हुई, और दे हैव रिकग्नाइज CPSP as a consultant status after 2 years of FCPS, and after FCPS, just after FCPS, they gave the status of a specialist, which is about 18,000 riyals. And अभी कुछ दिनों हमारा एक FCPS gastroenterology और nephrology गया, he got a pay of 30,000 riyals, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके ट्रांसक्रिप्ट में 5 years लिखा हुआ है. अब जब हमारे लड़के FCPS गैस्ट्रो के 7 years के जाएंगे ना, 4 और 3 के, तो उनकी पे तकरीबन 45,000 रियाल होगी राइट फ्रॉम स्टार्ट इंशाल्लाह. ये आयरलैंड में भी हमने सेंटर खोल दिया, इनके रॉयल कॉलेज में एक रूम मिल गया हमें, आयरलैंड में हम गए. ये साउथ अफ्रीका में हम गए थे, तो उनके प्रेसिडेंट ने दिखाया कि वो मोटर बाइक पे आते हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी मोटर बाइक पे आया करें. अच्छा, ये जो मैं बातें बताई हैं ब्रीफली आपको, जो सेंटर्स हमने एनलार्ज किए हैं, नए बनाए हैं अल्लाह ताला की तरफ से और बग़ैर फीस बढ़ाए हुए, इसकी वजह यह है कि 21 रमज़ान 23 अप्रैल 2023 को जब कौंसिल ने मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तो मैं बहुत शेकी था, बड़ा रिलक्टेंट था कि यार ये क्या जिम्मेदारी आ रही है. तो पहली जो मीटिंग हमारी कौंसिल की हुई, उसमें जनरल फ़ारूक साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैठे हुए, इन्होंने प्रपोज़ किया, तमाम लोगों ने इसको अप्रूव किया. हमने उस दिन से सूद को, टोटल सूद फ्री CPSP हो गया. सारे हमारे जो बजट्स थे, हमारे जो था सेविंग, वी शिफ्टेड इनटू द इस्लामिक बैंकिंग. ये मैंने कुरान पाक की आयत सुना दी है, और इसलिए बताइए कि ये मेरा ख्याल में ये उसकी बरकतें हुई. डे बिफोर yesterday in examination department, I was sitting in Karachi and I was checking the number of candidates who appeared in this February this year, yesterday and day before yesterday. There are 2,000 students appeared more compared to February 2022. So मैं तो फ़ौरन, अब मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा हो गया, मैंने फ़ौरन 15,000 फीस को 2,000 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी ये 3 करोड़ 10 लाख रुपए, तो वो हमारा एक्स्ट्रा हमारा हो गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह now CPSP is interest free. So with this, thank you very much for giving a patient hearing. I hope I did not bore you. CPSP is always with you in improving, enhancing strengthening the training of our trainees, in better education of our fellows, and in this building of the technical skills also. So I am again grateful to all of you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Shoaib. No doubt your devotion to CPSP and the field of gastroenterology, it has raised the standards of our specialty. Now a few words of wisdom by the most beloved personality of CPSP, Senior Vice President, Professor Khalid Masood Gondal Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू प्रोफेसर शुबाइल नुसरत. और ये तसल्ली रखें कि वे फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम ही होंगे और 5 मिनट से कम अरसे में मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा. और इसरार तूर साहब, गयासुन नबी तैयब साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सफ़र बहुत एहसन अंदाज में प्रोफेसर शुएब शफी साहब ने डिस्क्राइब किया, और मुझे 1986 याद आ रहा है, जब शुएब साहब रजिस्ट्रार, मोहित साहब सीनियर रजिस्ट्रार, नुसरत साहब एसोसिएट प्रोफेसर, ख्वाजा सादिक साहब फाउंडर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और ईस्ट मेडिकल वार्ड से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का आगाज़ हो रहा है. और आज माशाल्लाह इतने फेलोज, इतने यूनिट, इतनी एडवांसमेंट, ये अल्लाह पाक का कर्म है. और मैं ये समझता हूँ ये कलेक्टिव एफर्ट है आप सब की. और इसकी जो एक छोटी सी एग्जांपल मेरे सामने है, वो मेरे अपने क्लास फेलो हैं,
और वो हैं प्रोफेसर गयासुन्नबी तैयब। मैं जब वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बना तो मैं बनने के बाद मेरे पास प्रो वीसी की पोस्ट खाली, और मैं गयास के बाद पास गया। मैंने कहा गयास क्लास फेलो में इकट्ठे हो जाते हैं, कम ऑन एंड जॉइन किंग एडवर्ड एज द प्रो वाइस चांसलर। तो मुझे कहने लगे मेरा यूनिट देख लें, ऐसा यूनिट अगर आप डेवलप कर सकते हो तो मैं किंग एडवर्ड को ज्वाइन करता हूं। जब मैंने यूनिट देखा तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जिसमें पैलिएटिव प्रोसीजर, जिसमें थेराप्यूटिक प्रोसीजर, जिसमें ईआरसीपी और ईआरसीपी के साथ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और क्या क्या कुछ था। गयास ने बहुत काम किया वहाँ पे। और फिर मुझे याद आया कि ये जो वर्ड रोल मॉडल और मेंटर्स होते हैं, ये गयास पे वर्ड फिट आते हैं। गयास वहीं ठहर गए और प्रोवीसी की ऑफर इन्होंने एक्सेप्ट न की। कर लेते तो शायद आज वाइस चांसलर भी होते, बट दिस वाज पैशन फॉर द यूनिट विच ही डेवलप्ड। थैंक यू गयास, जिस अंदाज में आपने काम किया। और कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन को इसका तो लीड ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत शुएब शफी साहब ने बात की, और मैंने सिर्फ शुक्रिया अदा करना है कि आपने हमारे तमाम मेहमानों को इनवाइट किया। अयाज साहब शायद नमाज के लिए जा चुके हैं, आमिर जमान साहब मेरे कुलीग वाइस चांसलर यहाँ मौजूद हैं, और फिर आपने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। मजर इसाक साहब शान है ऑप्थेल्मोलॉजी की, जनरल सोहेल साबिर साहब नेफ्रोलॉजी की शान मौजूद हैं, जनरल वसीम सर्जरी के यहाँ पिंडी से तशरीफ़ ले आए हैं, फ़रक साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान आर्मी में, इब्रार अशरफ अली और प्रोफेसर तैयब के साथ जनरल तसव्वुर साहब को देख के भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हमारे वलीअल्लाह इसको यहाँ मौजूद हैं, फजल ख्वाजा साहब। सर आपकी मौजूदगी तो रहमत ही रहमत है। और इतनी खूबसूरत मजलिस को देख के और ये यूनिट ये कंट्रीब्यूशन देख के मैं इस दुआ पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अभी 3 मिनट 20 सेकंड हुए, 5 मिनट से पहले और फ्यू वर्ड्स का इख्तिताम कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले, जहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। बहुत शुक्रिया गयासुन्नबी तैयब एंड थैंक यू एवरीबॉडी इन दिस हॉल। फ्यू वर्ड्स ही सर ना, फ्यू ही सर। Thank you, sir. We here at PSG have a tradition to honor our gems, our seniors, who are pioneers in the field of gastroenterology. This year again, we are honoring 3 personalities from Punjab who have devoted their life in the field of gastroenterology. A brief preview of their lifetime achievements will be given by Dr. Farwa, followed by shield distribution by President CPSP. Assalamu alaikum. This year, Pakistan Society of Gastroenterology and GI Endoscopy is honoring 3 physicians for their outstanding contribution, dedication and commitment to the field of gastroenterology in general and Pakistan Society of Gastroenterology in particular. We will start with the senior most professor first. So I would like to call upon stage Professor Zahid Yassin Hashmi. Professor Yassin is Professor of Medicine, ex-Principal Punjab Medical College, Chief Executive of Allied Institute, Faisalabad. He established the first liver center in the city of Faisalabad and is currently serving as Chairman of the Liver Trust. He has been serving the people of his city for many decades now. He has exceptional qualities like vision, passion, character, competence, and dedication. He is an exemplary teacher and his work and contributions will always be remembered. Now I would like to request Chief Guest Professor Shoaib Shafi to hand over his shield to him.
Now I would like to request Dr. Mueed Ahmed Khan on the stage. Dr. Mueed Ahmed Khan is consultant physician and gastroenterologist. His major contribution is establishment of Department of Medicine in Services Hospital, Lahore. Dr. Mueed has been instrumental and an irreplaceable asset in the field of gastroenterology, a true pioneer and mentor who has led a long and distinguished career, received many honors such as serving as Vice President of Pakistan Society of Gastroenterology and GI Endoscopy. He is teacher of the teachers. His trainees have become the trainers of a whole generation of gastroenterologists and therapeutic endoscopists. Now I would like to request Chief Guest Dr. Shoaib Shafi to give him his shield. And last but not the least, Professor Gyasun Abi Tayyib. Professor Gyas is Head of Department of Medicine at Postgraduate Medical Institute, Dean of Gastroenterology, College of Physician Surgeons, Pakistan, President of Pakistan Society of Gastroenterology and GI Endoscopy, pioneer of endoscopy suites and GI units across Punjab, ex-CEO of Hepatitis Control Program in Punjab, member of Steering Committee of Prime Minister Hepatitis Control Program, and the list goes on. His contribution in the establishment of gastroenterology in Pakistan are unparalleled. His personal example of leadership and competence are of highest standards of excellence and serve as an inspiration to us all. A decorated role model to many colleagues around the world and has been committed to the education and training of young gastroenterologists in the country. Professor Gyas is a true humanitarian, devoting his time and expertise to several initiatives in the country. His legacy as a human being would be that he has always pursued excellence in everything that he has done. Over to you, Dr. Shamail. We feel proud that we have the company of Mr. Suhail Zindani. He is a leadership and innovative consultant. For almost a decade, Mr. Suhail Zindani has helped companies build and sustain a learning culture. With the mission of promoting learning, Mr. Suhail is one of the Pakistan's most sought after trainer, consultant, thought leader, and keynote speaker. Suhail is also founder and director of Learning Minds and president of Learning Foundation. I would request Suhail Zindani to give a thought-provoking lecture. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? तो मैंने अभी आप लोगों के साथ सलामती शेयर की है. अस्सलाम वालेकुम. Wonderful. So I've been sitting at the back listening to the presentations and the talk. ये इस तरह की जो ऑडियंसेस होती हैं उसमें जनरली वो एक परसेप्शन होता है कि हम हेल्थ टॉक करेंगे और उसके बाद दिन खत्म हो जाएगा एंड विल बी बैक होम एंड नाउ यू आर स्टक विथ मी. हम लोग सेशन अभी स्टार्ट करते हैं बट आई फर्स्ट नीड टू से अ बिग थैंक यू टू दिस प्रोफेशन. Though I have been working with doctors very extensively, but this is for the first time I am working with the society, or interestingly, not interestingly, but recently my father is benefiting from this profession. So a big thank you to each and every one of you. Let's start this conversation, and what we'll do is, देखिए दुनिया में दो किस्म के कॉन्स्टिपेशन होते हैं. एक कॉन्स्टिपेशन वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता,
बट देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन जो कि होता है साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन, और वो जब होता है तो उसमें बंदा मुस्कुरा नहीं सकता. हैव यू नोटिस दैट? जानते हैं आप लोग? हेलो, एक्सक्यूज मी, या जानते हैं ऐसे लोगों को, उनको मुस्कुराने में बड़ी तकलीफ होती है. कुछ बहुत ज्यादा हंसने की भी बात हो तो उनके मैक्सिमम आवाज से हाँ निकलता है. आज मुझे आप लोगों के साथ, और मुझे जो मैंडेट दिया गया था आप लोगों से बात करने का, इज अबाउट आवर मेंटल वेलबींग एंड हाउ हम लोगों के, हम जो काम करते हैं, देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर. ऑफ कोर्स देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर दैट व्हाट वी डू, बट आज के सेशन में मैं चाहूंगा कि, अच्छा, बाय द वे, I can see people at the back. There are few who are trying to pay attention. There are few who are leaving. But मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वो लोग जो रूम में मौजूद हैं, there is much for you. So let's start with an activity. Activity ये है कि you have to do what I say. मेरी आवाज क्लियर है सबको? समझ आ रहा है पीछे? Yes or no? Fantastic. So you have to do what I say. जो मैं आपसे कहूंगा वो आपने करना है. Start moving your hands like this, everyone. I hope यहाँ पे कोई ऑर्थोपेडिक इश्यूज नहीं है, राइट? और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, आपके लिए करना मुमकिन नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं. बाकी अगर आपको लगता है कि अल्लाह ने आपको ये हिम्मत दी है कि आप ये कर सकें, तो लेट्स बी पार्ट ऑफ इट, एवरीवन. यस, जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं समझूंगा कि देयर आर सम अदर फिजिकल चैलेंजेस. या सो नाउ यू हैव टू डू व्हाट आई से. ठीक है? अब अपने सीधे हाथ से, जल्दी एवरीवन, अपने सीधे हाथ से, और देखिए बाज लोग वही कॉन्स्टिपेशन में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आई नो. अब इसी सीधे हाथ से एवरीवन, या इसी सीधे हाथ से होल्ड योर नोज, एवरीवन. इसी सीधे हाथ से होल्ड योर ईयर, और इसी सीधे हाथ से एवरीवन होल्ड योर चिन. और सोचो कि अल्लाह ने आपकी चिन कहां लगाई है और आप किसको पकड़ के बैठे हैं. और जो लोग अब तक यही चिन पकड़ के बैठे हैं, यू नो द प्रॉब्लम नाउ, राइट? देखें जी, प्रॉब्लम यह है कि हम कितनी नेक बातें कर लें, हम कितनी बेहतरीन बातें कर लें, हम लोगों को एक चीज पता है साहब, पीपल फॉलो एक्शन. यस और नो? यहां पे पेरेंट्स कितने? पेरेंट्स, डू आई हैव पेरेंट्स इन दिस रूम? पेरेंट्स, फैंटास्टिक. आप में से कितने लोग अपने बच्चों को बड़ी नेक तालीमात देते हैं, उनको बताते हैं बेटा ये करना है और ये नहीं करना है? कैन आई सी योर हैंड्स प्लीज? Fantastic. Let me give you a breaking news. They don't listen. They just watch you. वो खाली आपकी हरकतें चेक करते हैं और फिर उस हरकतों के हिसाब से डिसाइड करते हैं. So now doctor profession, I've been having this privilege. मुझे डॉक्टर्स के साथ काम करने का ऑनर मिलता रहा है. एक चीज डॉक्टर्स के अंदर बहुत कांस्टेंट होती है और वो होता है हमारा वर्क प्रेशर, राइट? और बहुत दफा उस वर्क प्रेशर में एक चैलेंज आता है और वो ये कि वी स्टार्ट लूजिंग पर्सपेक्टिव. वो पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ चीजों से बन सकता है, एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू टॉक टुडे. होता ये कि 3 डॉक्टर्स होते हैं. लेट्स हैव सम डॉक्टर जोक्स. 3 डॉक्टर्स होते हैं. एक कार्डियक सर्जन होता है, एक ऑर्थो स्पेशलिस्ट होता है, और एक जनरल फिजिशियन होता है. वो जनरल फिजिशियन वो था जिसने बाद में पढ़ाई नहीं की थी. तो ये तीनों रोज सुबह वॉक पे मिलते थे. तो ये वॉक करके बेंच पे बैठे हुए थे तीनों, और सामने से एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था. तो जो कार्डियक सर्जन था उसने देखा और उसने कहा कि जिस तरह की इसकी वॉक है ना, मैं इसकी वॉक देखकर बता सकता हूं कि ये कोई स्ट्रोक हुआ है इसको, जिसकी वजह से इसका ये हाल हो गया है. तो वो जो ऑर्थो था उसने कहा एक तो तुम्हारा मसला ये कि तुम हर जगह कार्डियक मसले घुसा देते हो. दिख रहा है पांव का मसला है, घुटने का जोड़ का इशू है, तुम भी अपनी अपनी कहानियां करते हो. तो जो जनरल फिजिशियन था वो और एक्सपर्ट था. उसने कहा एक तो तुम स्पेशलिस्ट का मसला ये कि तुम्हें अपने मसले के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है. मुझे तो दिखता है चलने में कहीं बेचारे को छोटी सी खराश आ गई है, चोट है इसलिए ऐसे चल रहा है. जितनी देर में ये डॉक्टर्स अपनी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, इतनी देर में वो बंदा चलते हुए इन साहब तक पहुंचा, इन तीनों तक, और इन तीनों से पूछता है कि यहां अगर कोई मोची है तो बताना, मेरे जूते टूट गए. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. द प्रॉब्लम इज कि हम दुनिया को सिर्फ अपने लेंस से देखते हैं, और हमारा लेंस तो आपको पता है ना हमेशा सही होता है, उसमें गलती की तो गुंजाइश नहीं है.
ये रूम में अभी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो चले गए हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस रूम में ये 4 दीवारें हैं, और ये आई थिंक मिसाल, अगर तो मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूं कि आप तक पहुंचे, अगर ये दिल तक पहुंचती है ना, तो दिस कैन हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन योर लाइफ। ऐसा ही एक 4 कमरे वाला दरवाजा था, और एक चुपकली इस दीवार पे थी, एक चुपकली इस दीवार पे थी, और एक चुपकली यहां ऊपर कहीं लगी हुई थी, राइट? और चूंकि ये डॉक्टर्स हैं, तो वो हमारा काम इतना चूंकि इंपॉर्टेंट होता है, जिंदगी बचाने का काम होता है, तो एक इसी तरह की गैदरिंग थी, उसमें ये चुपकलियां थी। तो इन्होंने कहा यार अब हम सुबह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को सुन रहे हैं, हमारा क्या लेना देना इसमें, हम बाहर चलती हैं। तो जो यहां चुपकली थी वो गेट से बाहर निकलने लगी, जो यहां वाली थी वो भी घूम के पहुंच गई निकलने के लिए, लेकिन ये जो छत पे लगी हुई थी ना, ये कहीं नहीं गई। तो इन दोनों ने इसको बोला कि बहन तुम नहीं चलोगी? तो इस चुपकली ने कहा तुम देख नहीं रही हो, पूरी छत पकड़ के खड़ी हूं, अगर मैं गई और छत गिर गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम में से अपने काम की सीरियसनेस के अंदर रहते हुए बहुत सारे लोग वो तीसरी चुपकली बन जाते हैं कि हमको लगता है कि अगर हम नहीं हुए तो ये दुनिया चलेगी कैसे, जबकि ये मैं आपको बहुत अश्योरेंस के साथ बता रहा हूं कि वो चलती रहेगी, और वो चलती रही है। सो टुडे आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज, और उसके बाद ऑफ कोर्स वी कैन कंक्लूड, एंड दिस मैसेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ये मैसेज है दिमाग का, और जितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है, मेरी आपसे एटलीस्ट इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को अपनी फैमिलीज तक जरूर पहुंचाएं। हमारा जो दिमाग है ना, उसमें माइनस और डिवीजन का फंक्शन नहीं है। हमारे दिमाग में माइनस और डिवीजन का फंक्शन नहीं है, खाली प्लस और मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है। अच्छा जी, ये कैसे? आप में से कितने लोगों ने सुना है या आपको किसी ने बड़ा नेक मशवरा दिया है कि अपने नेगेटिव ख्यालात को मार दो? ये अजीम मशवरा कितने लोगों ने सुना है और कितने लोगों ने दिया है? देखें जी, अपने दिमाग में से नेगेटिव ख्यालात को निकाल दें। किसी को यह मशवरा मिला है इस रूम में? हेलो, आपको मिला है? सर फैंटास्टिक, थैंक यू, मुझे खुशी हुई आपको मशवरे मिले। मशवरे लाइक लोगों को मिलते हैं, राइट? तो आपको ये मशवरा मिला है कि भाई अपने दिमाग से। और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब नमाज पढ़ने बैठते हैं तब आपके दिल में ख्याल आ रहा होता है कि आज कोई दिमाग में ख्याल ना आए, सिर्फ नमाज पे ध्यान दे सकूं। ये कितने लोगों को ख्याल आता है? फैंटास्टिक। लेकिन क्या उसके बाद ये होता है? जैसे ही नमाज शुरू होती है ना, पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम दिमाग के इसेंशियल फंक्शन का काम नहीं कर रहे। व्हाट इज द इसेंशियल फंक्शन? द इसेंशियल फंक्शन इज प्लस एंड मल्टीप्लाई, नॉट माइनस एंड डिवाइड। हम दिमाग को ये कह ही नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप माशाल्लाह यहां पे तकरीबन सारी पढ़ी लिखी ऑडियंस है। मुझे आप लोग ये अचीव करके दिखाएं कि आपने एक बंदर के बारे में नहीं सोचना जिसने लाल शॉर्ट्स और येलो टी शर्ट पहनी है। ओके? एक ऐसे बंदर के बारे में आपने कतई नहीं सोचना जिसने लाल शॉर्ट्स और येलो टी शर्ट पहनी है। द मोमेंट आई से यू कि आपने ऐसे बंदर के बारे में नहीं सोचना, यू नो व्हाट योर ब्रेन डज? वो उसी के बारे में सोचेगा। अब उसको दुनिया में और कुछ नहीं दिखेगा। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हमारे प्रोफेशन में देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, अ लॉट ऑफ इस तरह के इल्जाम जो शायद हम डिजर्व भी नहीं करते। बट होता क्या है, मैं ये चूज करता हूं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, और ये एग्जाम्पल सर आप सर क्या नाम आपका? हाँ, गजल ख्वाजा साहब। तो गजल ख्वाजा साहब, मैं अगर आपसे ये कहूं कि सर ये मेरे को आपकी दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, कल काट के आइएगा, आपको ये बात सुन के बुरा लगेगा? यस और नो? बुरा लगेगा ना? आप कहेंगे तुम होते कौन हो? ऐसे ही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं,
मैंने गजल साहब का फिजिकल एट्रीब्यूट ऑल्टर करने की बात कही, राइट? फजल साहब, मैंने इनका फिजिकल एट्रीब्यूट ऑल्टर करने की बात कही तो आपको बुरा लगा, राइट? कोई मेरा पूरा साइकोलॉजिकल ऑर्डर खराब करके चला जाता है, मुझे बुरा नहीं लगता? तो एक कोलीग के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरी ऑफिस में ही काम करता था, मैं अक्सर उसको डांट देता था लेकिन उसको बुरा नहीं लगता था। तो एक दिन मैंने उसको बुला के बोला, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता? यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड, बॉस जब आप मुझे बुरा भला कह रहे होते हो ना, तब मैं सोचता हूं कि बॉस पे कितना टेंशन होगा, इसलिए मैं आपको दिल से माफ कर देता हूं। एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट लेसन ही टॉट, कि एटलीस्ट आपका दिमाग कैसे चल रहा है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता। सो एक चीज बहुत सिंपल, और उसके साथ फिर we'll have a concluding thought, and that is, and I think it's a very simple message. And what is that? The message is that दुनिया आपके हिसाब से कभी भी नहीं होती, राइट? कुछ आपके हिसाब से हो जाता है। मुझे नहीं पता अभी यहाँ कितने, मुगीस साहब को आई नो पर्सनली, बट कितने डॉक्टर्स और यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत दफा होता है ना कि डॉक्टर जब क्लिनिक कर रहा होता है या पेशेंट के साथ होता है, बड़ी तारीफें हो रही होती हैं, फिर घर पहुंचता है, फिर स्पाउस वो एक अलग फीडबैक देती है या देता है, और उसके बाद सारा वो पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विच वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। द वर्ल्ड विल नेवर हैपन योर वे। दुनिया कभी भी आपके हिसाब से नहीं होगी, ये बात समझ आती है, लेकिन मसला तब होता है जब आप भी अपने हिसाब से ना हो। दुनिया आपके हिसाब से नहीं होगी यार, ये अगर आप सोचो ना सर, अगर दुनिया आपके हिसाब से हो तो मैं कहां जाऊंगा? नहीं हो सकता। मैं ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मेरे रूम में अगर मैं सेशन ले रहा हूं तो कितने लोग बैठ के सुनेंगे, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। लेकिन ये मैं डिसाइड जरूर कर सकता हूं कि अगर आप यहां अकेली भी बैठी हैं, माई जॉब इज टू मेक श्योर दैट आई एम एबल टू एड वैल्यू टू योर लाइफ। ये मैं डिसाइड कर सकता हूं, ये और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। एंड आई थिंक ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसको अगर हम प्रोमोट कर पाते हैं अपने डे टू डे लिविंग के अंदर, दिस विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट। एक बेसलाइन थॉट में यहां पे अभी आप लोगों के साथ करना चाहूंगा, एंड लेट्स डू इट। हम इसको करेंगे। इंस्ट्रक्शन मेरी ध्यान से सुन लें, या इंस्ट्रक्शन मेरी ध्यान से सुन लें। आपने अपना सीधा हाथ उठाना है, सीट से उठे बगैर, ठीक है? लेकिन इतना जितना उठा सकते हैं उठा लें, ठीक है? ओके, अपना सीधा हाथ जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठा लें। एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर मुगीस जी, जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठा लें, उठा के रखें। इसमें कोशिश करें अगर एक आध इंच और ऐड हो सकता हो, देखिए अगर एक आध इंच और ऐड कर सके। एंड्स डाउन। आपको पता है मेरी पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी? मेरी पहली इंस्ट्रक्शन थी कि भाई साहब जितना हाथ उठा सकते हैं उठा ले। इसका मतलब है 100% हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब मैंने कहा ना देखो एक आध इंच और कहीं से, माशाल्लाह सबका निकल आया। कुछ समझ आया? देखिए हम लोग बहुत सारी चीजों में हम केसेस हैंडल करते हैं, समटाइम केसेस डू नॉट गो द वे वी वांट। यस, ये होता है, बहुत दफा होता है। हम केस जिस तरह से चाह रहे होते हैं वो उस तरह से नहीं टर्न आउट होता, राइट? डॉक्टर से ये एक्सपेक्टेशन करना, और ये जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं दे ऑल वाउच फॉर इट। आई वाज अभी रिसेंटली लिसनिंग टू प्रोफेसर देवी शेट्टी, उसकी टॉक में ही सेड द सेम थिंग। ही सेड डॉक्टर के लिए ये कभी मुमकिन नहीं है कि ही डज द बेस्ट, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर सिर्फ एक चीज कर सकता है, दैट इज हिज और हर बेस्ट। द बेस्ट नहीं होता कुछ भी, देयर इज नथिंग सच एज द बेस्ट, ये हो ही नहीं सकता। आप में से, अब मैं अभी यहां रूम में जितने लोग बैठे हैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं ना, आप में से लाइफ में कितने लोगों ने गलत फैसले लिए? हाथ उठाए। ओके, कितने लोग मैरिड हैं? लगभग उन्हीं ने हाथ उठा के रखा। यू सी, हम लाइफ में फैसले लेते हैं, ये उस वक्त सारे फैसले सही लग रहे होते हैं ना, ये तो फिर बाद में।
जब दूसरी रियलिटीज आश्कार होती हैं तो हमें पता चलता है। सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स तो अपनी जगह है, लेकिन यहां पे कितने पेरेंट्स बैठे हैं? कैन आई सी योर हैंड्स प्लीज? हैंड्स। पेरेंट्स, फैंटास्टिक। तो कितनों ने अपने बच्चों को कभी अजीम तरीके से समझाया है, बेटा जब हम छोटे थे, या हमारे दौर में वाली लैंग्वेज कितने लोगों ने यूज की है यहां पे रूम में? कम ऑन, आई वांट टू सी योर हैंड्स। हमारे दौर में बेटा, हमारे दौर में। ओ माय गॉड। ओके, ये जो हमारे दौर है ना, देखिए कुरान में भी असर की कसम खाई गई है जमाने की। एक पोम है, बच्चों की पोम, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, प्लेस टू बी हैप्पी इज हेयर, वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी, एंड वी हैव अ लिटिल हेवन राइट हेयर। ये बच्चों की पोम है, कोई फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है। क्या है जी? खुश रहने का वक्त अभी है, खुश रहने की जगह ये है, खुश रहने का तरीका ये है कि किसी को खुशी पहुंचाओ, और यही लगभग जन्नत है। ये बच्चों की पोम है, बट आई थिंक दिस हैज अ मीनिंगफुल इंपैक्ट फॉर आवर लाइव्स। हम जिस तरह से जिंदगी को परसीव करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, आई थिंक देयर इज मैसिव लर्निंग इन इट, मैसिव लर्निंग। So now that I want to have a final thought upon how I would like to conclude, and what is the concluding remark I would like to give for this talk, which I brought for you, is that हमारा एक बुद्धा का एक बहुत जबरदस्त वो है thought, and ये this thought came to me आज से तकरीबन 10-11 साल पहले, and that changed the way I look at things. जिस दौर में बुद्धा प्रैक्टिस करता था, उस दौर में होता ये था कि मॉन्क्स जहां बैठते थे ना, इनको खाने का एक्सेस नहीं होता था। तो खाना कोई पहुंचा दे तो मिल गया, वरना ये इनमें से कितने तो भूख में ही मर जाते थे इनिशियल प्रैक्टिस के अंदर ही। तो जब इनको खाना मिल जाता यार, वो इनके लिए बड़ी बात होती थी, बड़ी बात होती थी। तो बुद्धा ने एक एक्सपीरियंस किया, ये उसने देखा कि मॉन्क जो अपना दिमाग काबू करने की कोशिश कर रहा है, इसको जब खाना दिखता है पागल हो जाता है, क्योंकि उसने पता नहीं कब से, कितने दिनों से नहीं खाया होता। तो उस वक्त बुद्धा ने एक बात बोली थी कि व्हेन यू नीड द फूड सो बैडली, व्हेन यू नीड द फूड सो बैडली, आपको बहुत शिद्दत से खाना चाहिए हो, और उस वक्त आपको खाना मिले और वो खाना आप किसी और को दे दें, तो ये देना आपको कमजोर नहीं मजबूत करेगा। जब आपको खाना बहुत शिद्दत से चाहिए हो, उस वक्त मिले और आप वो किसी और को दे, उस वक्त वो आपको कमजोर नहीं बहुत मजबूत करेगा। हम सेम फिलॉसफी को लाइफ में इज्जत के साथ, पैसे के साथ, इनफैक्ट हर चीज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत दफा हमें लगता है शायद मुझे इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट वे, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली। ऑल्दो ये एक मेरी बड़ी ख्वाहिश है, 2-3 एरियाज आई थिंक इस मुल्क में बहुत काम किए जा सकते हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊं, एक अप्रिसिएशन कल्चर, जो जूनियर डॉक्टर होता है उसको सीनियर से अक्सर अप्रिसिएशन मिलता नहीं है, और फिर जब वो सीनियर बन जाता है वो कहता है मेरे को मिला नहीं था तो मैं क्यों दूं, ये भी कमबख्तों को ऐसे ही सीधा करना चाहिए। आई थिंक अप्रिसिएशन, और फिर यहां पे अगर हम किसी को पढ़ा दे, अल्लाह माफ करे, कि भाई साहब अप्रिशिएट किया करो, तो आपको पता है काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है? और जी तारीफ नहीं करे बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। कितने लोगों ने ये जुमला सुना है? कम ऑन एटलीस्ट रेज योर हैंड। हाय शाबाश है, तारीफ नहीं करे दिमाग। मैं आपको 3 सुनहरे तरीके बताना चाहता हूं तारीफ के, और ये आप क्यों करें? बिकॉज आई थिंक हम जिस सोसाइटी में ना, इसमें हॉस्टिलिटी इतनी नेचुरल है। आप देखें, क्रिटिसाइज करने वाले उसकी क्वांटिटी आप देख लें, और तारीफ करने वालों की क्वांटिटी देख लें, आपको मैच पता चल जाएगा कहां खड़े। सो तारीफ के 3 सुनहरी असूल। पहला असूल मेरा नहीं है, यह हजरत अली का कौल है। क्या है जी? तारीफ इज्तमा में, तनकीद इंफरादियत में। प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। आप में से कितनों की पब्लिक में बेइज्जती हुई है? वो लोग हाथ उठाएं जरा।
वे हाथ उठा लें, थोड़ी हिम्मत कर लें, कोई नहीं, सबने स्कूल में पढ़ाई की है, हाँ पब्लिक में बेइज्जती हुई है, वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ कि पब्लिक में आपकी बेइज्जती हो रही है और उसके बाद आपने सोचा हो अब इंप्रूव करना है? हमारे सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि या अल्लाह तू इतने बंदे उठा ही रहा है ना, इसको इस पे तेरी नजरे करम क्यों नहीं पड़ रही, राइट? दूसरा प्रेस का, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तारीफ स्पेसिफिक करें, उस शख्स की जो तारीफ हो रही हो ना, वो तारीफ किस चीज की हो रही है ना, उस चीज की तारीफ उसको पता हो। हम जनरली तारीफ पता कैसे करते हैं, यार तेरी बात ही अलग है। अच्छा, और हमारा तो कराची में एक जनरल अंदाज है ना, यार तू बंदा चीता है। अब चीता है मैं उसको क्या समझ आया, दुम बड़ी करनी है, क्या करना है, व्हाट्स द आइडिया? और तीसरा, एंड आई थिंक मेडिकल एजुकेशन में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तारीफ प्रोसेस में करें, डेस्टिनेशन पे तारीफ की जरूरत नहीं रहती। जब बंदा उस राह पे चल रहा हो ना, तारीफ की जरूरत वहां होती है। अ लॉट ऑफ पीपल लूज होप इन द प्रोसेस। सो एज आई कंक्लूड, आई वांट टू कंक्लूड विथ वन थिंग, एंड दैट इज, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में ना, मैं इसीलिए तारीफ के इस मौजू पे आया। हमें क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिलेंगे। वाइल आई ट्रेवल एंड आई मीट विथ अ लॉट ऑफ पीपल, एक जनरल परसेप्शन जो प्रमोट किया जाता है डॉक्टर्स के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि वो नए डॉक्टर्स जो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, जो परसू कर रहे हैं हेल्थ केयर को, वो क्या उनको इंस्पिरेशन मिलता होगा। बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी कैन डू इज कंटिन्यू गिविंग आवर बेस्ट, बिकॉज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, क्रिटिसिज्म करने वाले हमें अक्सर लगता है ना बहुत है, वो शायद 0.1% होते हैं, लेकिन वो वोकल होते हैं, एंड दैट्स व्हाट नीड्स टू बी ब्रोकन। हमारे इर्द गिर्द आप एक जनरली चीज देखें, आपको पता है यूएस का हेल्थ केयर बिल है $3 ट्रिलियन का। मतलब दुनिया में यूएस को रशिया या चाइना नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, उनका अपना हेल्थ केयर बिल उनको नुकसान पहुंचा रहा है। $3 ट्रिलियन सालाना, $3 ट्रिलियन, $3 बिलियन में हम पूरा मुल्क गिरवी रखवाने को तैयार पड़े हुए। $3 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि हेल्थ केयर एज एन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड आई थिंक इट शुड ग्रो इन ऑल राइटफुल रीजंस, बट द कल्चर ऑफ हेल्थ इज नॉट ग्रोइंग, and I think that's where contribution of doctors can completely transform the society. So with this, I would like to conclude, because I understand you have been through all the sessions today. I thank you for having me, sir. और आप लोगों से सिर्फ एक बात कहकर मैं ये सेशन, क्योंकि आई थिंक यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये काबिल सताइश इसलिए हैं क्योंकि नॉर्मली जब इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उसमें शील्ड के बाद हमारा दिमाग तैयार होता है जाने के लिए, और मैं खास तौर पे आपका शुक्रगुजार हूँ, जिसको शील्ड मिल जाए वो तो फौरन चला जाता है। ये तो हमारा नॉर्मल सोशल कंडक्ट है। बट आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु चोज टू सेट हियर, इट्स चॉइस, बट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड विथ वन थिंग, एंड ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम ये दुनिया की लार्जर स्कीम में जो है ना, हम बहुत छोटे हैं। डॉक्टर साहब, आप सुबह उठे, आपके दिमाग में ना कोई एक नास्टी ख्याल चल रहा है? और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं आज दिन अच्छा नहीं है, सारे प्लेनेट सही चल रहे हैं, सूरज वक्त पे निकला है, जमीन की गहराई में, समंदर की तह में जो जानवर है उसको भी खाना मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक ख्याल मेरे दिमाग में नेगेटिव आ गया और डॉक्टर साहब को लगता है दिन अच्छा नहीं है। इसको मैं कहता हूं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। हमारे इर्द गिर्द अ लॉट ऑफ टाइम क्रिटिसिज्म कम्स, अ लॉट ऑफ टाइम कम्स, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन मेरा दिन बना रहा है ना, तो आई थिंक मैं इतना आउटसाइड डिपेंडेंट हूं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
I think ये focus जब तक inward नहीं आता, we cannot improve as individuals as well as society. So आप लोगों का बहुत शुक्रिया, उन तमाम लोगों का who chose to sit here, because as I say, it's a choice. Thank you so much, and thank you so much the association for inviting me for this talk, and thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Swell sir. Now coming towards the last moments of this inaugural session, and a few comments from the man of the day, the star of the day, the brain behind all this activity, Professor Israrul Haktoor Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Ismail. As the Chairman of Organizing Committee, 39th Annual Pakistan Society of Gastroenterology GI and Endoscopy meeting, it's my pleasant duty to thank all of you, especially our Chief Guest, President CPSP, Professor Shoaib Shafi, Senior Vice President, Professor Gondal, all the council members, national and foreign delegates, and representative of pharma industry, Professor Farooq Afzal, and all the postgraduate students, my team as organizers. I am humbled and I am very thankful for all of you for your presence. I am honored. Thank you very much. With these kind words, we are closing the session. The dinner is ready in the same hall where the lunch was served. Thank you. Grand ballroom, yes. you.